हेलो and अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? Guess where we are today? अच्छा, काफ़ी दुनिया के काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में गया हूँ, लेकिन ये जो सिटी एंड द प्लेस इटसेल्फ इज़ अनदर चार्म. आई कैनॉट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. मतलब ये है तो यूरोपियन सिटी, लेकिन ये कि वेरी हिडन जेम. नॉट मैनी पीपल दे बेसिकली उधर जाते नहीं हैं कि ज़्यादा टूरिज़म के लिए. हालांकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना इज़ डिफरेंट लेवल. So I'm sure you have pretty much guessed it, or whoever has not. And this is a place called Vienna. It's in Austria. It's one of the European city as well. Really nice, beautiful. आगे आप वीडियो में देखेंगे यहाँ का जो लैंडस्केप है. मैं अभी नॉर्दर्न साइड पे तो नहीं गया, लेकिन मैं आई वांटेड टू गो एंड आई वांटेड टू शो यू स्विट्ज़रलैंड. और इसकी ब्यूटी जो है ना, इज़ कंपैरेटिवली वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर. यहाँ के जो साइड के विलेजेस हैं, वहाँ का जो खाना है और वहाँ के जो पार्क्स हैं, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स जो हैं इनकी, इट्स ब्यूटीफुल. आप सिटी में वॉक करें, आपको लगता है यू आर जस्ट वॉकिंग इन अनदर प्लेस. सो लेट्स गो. टुडे वी जस्ट वॉकड इनटू द होटल. इट्स अ नाइस होटल. यहाँ पे होटल जो है यूजुअली इज़ जस्ट नाइस. इट्स ओके, जस्ट नॉट लॉट ऑफ लग्जरी, लेकिन ये होता है बड़े बेसिक सी उनकी चीज़ें होती हैं. लेकिन सरप्राइजिंगली दिस होटल वाज नाइस. So I just came out, woke up after a few hours and then got my coffee. कॉफ़ी के बाद मैं होटल से निकला तो बिल्कुल बाहर जो था ना, वो पार्क था. सो पार्क के पास मैंने जस्ट सेट देयर फॉर अ व्हाइल. वहाँ पे इट्स नाइस. स्विंग लगे हुए हैं, डिफरेंट बेंचेस बने हुए हैं लोगों के लिए. देयर इज़ अ वाटर ड्रिंक, देयर इज़ ऑल्सो a cycling track, a racing track, and also a walking track. तो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू. मैं जिस दिन गया उस दिन संडे था. पीपल वर ऑफ, सो लॉट ऑफ पीपल वर इन द पार्क विद द किड्स एज वेल. सो आई स्टार्टेड वॉकिंग टू द सिटी. मुझे बेसिकली मैं यहाँ पे 2-3 जगहों पे गया हूँ, लेकिन आई विल कवर इन दिस वीडियो जस्ट वन प्लेस दैट आई वेंट टू सिटी सेंटर, वेयर वी विल सी डिफरेंट आर्किटेक्चर बिल्डिंग. वहाँ के जो फेमस इनके कैथेड्रल्स हैं, इनकी जो शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, इनके खाने वाने जो हैं, एंड द आइसक्रीम्स एंड द फूड इटसेल्फ. So to my surprise, in the previous shot that you saw, it was mayonnaise and ketchup in a tube. I never seen it, to be honest. It was very short. जैसे हम साशे यहाँ पे देखते हैं अक्सर, इन्होंने ऐसे ये जो है ना वो ट्यूब्स रखी हुई थी. And this was quite a good idea. So hotel से about it was 40 minutes walk to the city center, and you will see it's very famous for its park. हर सेकंड मतलब कॉर्नर के ऊपर आपको यहाँ पे पार्क नज़र आएगा. यहाँ की ट्रैम्स चलती हैं सिटी सेंटर में. इनका जो नेटवर्क है लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इट्स रियली नाइस एंड अमेजिंग. जगह जगह पे आपको जहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ करना है, आप यू कैन जस्ट गेट द ट्रैम. कार्ड मिलता है, आप कार्ड यूटिलाइज़ कर सकते हो. मुझे ज़्यादा वॉक करना पसंद लगता है, सो आई विल जस्ट यूजुअली वॉक. इट्स अबाउट 5 to 10 किलोमीटर्स. एंड उसके आगे जो है फिर आई ऑलवेज़ यूज़ ट्रांसपोर्ट. So this was my second stop after the first park. Another park that I have seen. People are sitting there, you see. They are enjoying their afternoon. Sunday वाला दिन है, so everyone is out. कभी कभी मैं सोचता हूँ इन लोगों की, मतलब they have a different priorities in life. Quality of life they have is another level. इनकी priorities भी हो रहे हैं obviously. The way they think about the life is completely different than how we basically live our life in our part of the world. आप कुछ ना करें, मतलब पार्क में यू जस्ट कम हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स. यू डोंट हैव टू बी लिटरली डूइंग एनीथिंग. इट्स जस्ट स्पेंड योर लेट आफ्टरनून. ये सामने जो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, कुड नॉट गो, इट वाज संडे. बड़ा लंबा रास्ता. ये ना बटरफ्लाई पार्क है. इट्स बेसिकली नेचुरल इनहेबिटेंट बटरफ्लाई पार्क. सो रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल. आई वांटेड टू गो इनसाइड, लेकिन काफ़ी लंबी क्यू थी, सो आई जस्ट हैड टू गिव अप बिकॉज आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. सो उसके बाद पार्क में थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग. मुझे थोड़ा सिटी सेंटर में जाना था. सो आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द सिटी सेंटर, एंड ऑन द वे आउट you see a lot of different architectural building. They are really nicely decorated, beautifully designed.
The weather was really good. It was sunny and then at some point like in quite nice, very pleasant, not really hot and not very cold. This is one of their dome and it's considered to be a museum as well. लेकिन इसका आर्किटेक्ट आप देखें, you cannot really describe it in a video itself. लेकिन you literally have to see with your eyes and you will really appreciate the beauty of it. अच्छा, ऑस्ट्रिया का ना एक बड़ा पुराना कल्चर है. ये लोग जैसे हमारे वहाँ पे जो चलते थे ना टांगे शांगे पुराने दौरों में, आई काइंड ऑफ मिस दैट बिकॉज आई ग्रोन अप यूजिंग दैट काइंड ऑफ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो इट्स रियली एक्साइट मी. इधर ये है कि थोड़ा आपको if you want to ride it you usually need to pay with the euros and that's a lot of money obviously. I have seen it here in Vienna and second जो मैंने जगह पे देखा था वो था ब्रसल्स में, बेल्जियम में. तो वो तो खैर सिटी इसका वेरी मतलब आइसोलेटेड थोड़ा तंग है. लेकिन इधर तो जनाब उन्होंने बड़े यू कैन सी द हाउ दे आर सूटेड बूटेड विद द हैट्स ऑन एंड दैट्स ऑब्वियसली is their cultural thing, that's how they basically used to dress up and used to drive down this tanga. I call it a tanga. तो यहाँ पे इनका आप पार्किंग स्टैंड समझ लें जहाँ पे लॉट ऑफ टूरिस्ट, दैट्स द फर्स्ट स्टॉप दैट यू स्टॉप ओवर. तो यहाँ पे इन्होंने ना बनाए हुए हैं, यहाँ पे इनकी टिकटिंग होती है एंड यू कैन लिटरली get it as itself and then you can just ride over. They take you through the area. This is a very famous shopping street. यहाँ पे ना सारे major brands and that's one of the tourist attractions in Vienna, Austria. काफ़ी crowded जगह है, बहुत सारे लोग. देखिए ब्रांड्स जो है ना वो यूरोप में या दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, the brands are the same. I usually walk around, it's the same thing that you will see in for example in London. The same thing you will see it here because they are uniformed. The only difference that you find is the quality. sometime आपको US में अगर जाएं the quality of the things are completely different than in here. इधर आप लुई विटन का स्टोर देखें, it's like itself is an art. It was closed, लेकिन यह कि आप बिल्डिंग देखें, उसका आर्किटेक्ट देखें, it just reminds you like you are in a sort of old era or something. Just walked around in the city. सामने जो आप देख रहे हैं वो बड़ा it's very famous cathedral and also one of the famous tourist attractions. यहाँ का आप exterior इसका देखें and you just wonder कि ये कैसे इन्होंने how they have built it. जैसे हमारे ज़माने में like it used to be like all these old buildings and you wonder sometime कि ये pyramids कैसे बने थे and all these historical buildings. This is how you think about this architect कि it's been built years and years ago and it's still intact. Obviously उसको preserve करते हैं, उसको renovate करते हैं, लेकिन the way it looks is splendid, it's beautiful. उसके बाद I just started walking around in the city. I found this really nice cool cafe. It was more of like a pink theme. If you have seen my previous video, we went to one in Dubai, and the one in Dubai I tell you is much more prettier than this. This was really nice. I didn't really eat or try anything in here, but I just tried like the way. So it was my cheat day on that day and I was craving for McDonald's, so I literally went inside without caring about anything before I changed my mind. So McDonald's खाया वहाँ, उसके बाद after McDonald's you have to have something sweet. Just like if you go in Italy, वहाँ पे जो ना आप gelato है, कहते हैं इसको भी gelato ही है यहाँ पे, लेकिन it's mostly called ice cream. The flavor I took, it was the hazelnut and coconut, and it was delicious. It was really nice. It's a good treat after a long time. I tried something as an ice cream and that was really a good treat. ये इनकी shopping streets है जहाँ पे you find it all these major brands. People are literally walking around just enjoying their time and shopping.
people are usually very friendly, they are very accommodated. I mean, tourist place है तो a lot of tourists they basically come over, so they are very friendly and usually very nice to kind of assist you with anything that you have query to. And after spending a whole day in the city, it was time for me. Whatever I ate, McDonald's, ice creams and everything, so it was time to hit for a gym. जिम जाकर थोड़ा वर्कआउट किया. वर्कआउट करके जो कैलोरीज वो थाड़ी खाई थी आज वो बर्न तो नहीं हुई, लेकिन चलो समहाउ जो आप वो गिल्ट फील करते हो ना जो मैकडोनल्ड्स और आइसक्रीम खा के, it just at least helps you to get over it. That's how you can think about this. तो वर्कआउट ज़ाहिर है आपको फिर थोड़ा खाने के बाद it takes time until you get used to of doing it, but it was really nice. And this was a rooftop क्योंकि जिम जो था वो rooftop पे था होटल के. And at this time it started getting cold. It was a rooftop of that. Not many people वहाँ पे इन्होंने साइड पे एक वो rooftop बार जो है ना बनाई हुई है, but nobody was there. It was literally a bit cold, लेकिन व्यू अच्छा था ऊपर से. You could literally see all over Vienna if you want to go one more step above. And overall it was a really nice time spent in this is what I could show you in a very short vlog. Part 1, I will upload another vlog for Vienna, and that will be the long one that we went to the hill station, we went to the palace, and there were a lot of beautiful things for me to see in Vienna and really enjoyed it. Until I see you next time in the second vlog, and this is what you can see for now, plane taking off and my vlog is going off as well. Till we meet again, take care, Allah Hafiz.